हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 नंबर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पहले हम फिजिकल मीनिंग की बात कर लें तो फिजिकल मीनिंग जो है सिंपली जो द डेफिनेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इससे नाम से पता लग रहा है तो मे बी किस तरह से, तो देर इज अ रिलेशन कि इफ अ पार्टिकल is rotating in xy plane, let us suppose this is xy plane about an z axis. So how this particle rotate, how much area the particle swept out, and the relation between angular momentum, this area, time interval, velocity, वो सारा ही that is actually we have to find out the relation. So formula derive करना है हमें या relation derive करना है। तो let us suppose कि particle जो आपका पहले है वो k point पे है, and let us suppose the mass of the particle is m. So now let us suppose a particle moves from k point to L in small interval of time dt. So there will be a small area swept by this particle. Actually this time interval is very small, so area also swept by this particle is also very small. Let us suppose this is dA. Let us suppose r is the position vector of a particle when it is at k, and r plus dr, that is the position vector of a particle when it is at position L, and this is displacement particle and displacement of the particle k. So kl is equals to dr vector, ok equals to r position vector, ol equals to this one. So let from O point draw a perpendicular OM, and OM, let us suppose the magnitude of OM that is equals to KL. So actually when we draw this perpendicular OM, so we are actually form an parallelogram OMKL. So this is the perpendicular distance in this parallelogram and this is the base. So now, as I earlier told you that we have to find out the relation between dA vector, dt, angular moment. So how we can derive the relation? So basically first of all we have to find out the area. So area swept by the particle in time dt. So in time dt, so dA is the area swept by the particle and this is the area of triangle OKL. Or we can write down the area of half into area of parallelogram OMKL. So this area is simply half into this OK base into a perpendicular distance. That perpendicular distance is OM. So your area is dA and dA is equals to half, and here OK is equals to R position vector OM, that is equals to KL, and we can write down dr. So area swept out by this triangle in time dt.
So if we can find out dA by dt, so we can write down r into dr by dt. dA upon dt, there is also dr upon dt. एंड दिस टर्म, ये याद रखना है, आगे भी यूज होगा अगले चैप्टर में. दिस टर्म इज नोन एज एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी का मतलब है द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज हाफ इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी. सो दिस इज, एंड यू नो दैट डी आर बाई डी टी इज वी. अभी जो आप रिलेशन देख रहे हैं आर क्रॉस बी, बट हमें जो पहुंचना है वो हमें देखो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालना है. तो एंगुलर मोमेंटम को ही कोरिलेट करना है कहीं ना कहीं. तो एज P, that is momentum, equals to mv, so your v equals to P अपॉन m. सो यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो वी हैव dA अपॉन dt इक्वल्स टू हाफ एज इट इज r क्रॉस p एंड अपॉन m. सो r क्रॉस p, so r cross p is L, that is angular momentum. So dA upon dt equals to L upon 2m, and we can write it as L equals to 2m dA by dt, and this relation is known as geometrical meaning of angular momentum, and its meaning is that angular momentum for any particle which is swept out an area in time dt is twice of the mass of the particle into aerial velocity. This term is known as aerial velocity. ये ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 नंबर में बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में डायरेक्टली डिराइव करने को भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको. सो दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अगर फिजिकल मीनिंग के लिए कहा जाएगा तो आपने ये रिलेशन लिखना है, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए कहा जाएगा तो आपने ये रिलेशन लिखना है. ओके, थैंक यू.